Hello guys, good evening. So in last video I was discussing about the equivalent resistance, how to find out the equivalent resistance of electrical network. Hope you understood and liked my video. But in this lecture I am going to explain about current division rule and voltage division rule with some trick. So this lecture will be very interesting, and these two concepts are very important for electrical circuit analysis, right? So without wasting our time, we'll start our video. So my name is SR Prusti and you are watching my beautiful channel Love You Science. So let's start. So first we'll discuss about current division rule. So first we'll discuss about current division rule. Current division rule. See, what is current division rule? If you have two resistance of R1 and R2 and if they are connected in parallel, if supply current is given to you, supply current which is flowing through the circuit is given and both the resistance value is given, you need to find out what is the current through individual resistance. Then we'll go for current division rule. So what is the formula of I1 here? Is supply current, total current into opposite resistance. Matlab here R2 by sum of two resistance. Got my point? Branch current I1 is the current flowing through R1. I1 is equal to supply current into opposite resistance by sum of two resistance. Similarly, tell me what is I2? That is supply current into R2 का opposite क्या है? R1. So R1 by R1 plus R2. Or else if we find out I1, you can get I2 as I minus I1 according to KCL, Kirchhoff's current law. So ये हो गया आपका standard formula. Okay, let's take an example. Let you have a circuit of two resistance are connected in parallelly. One is like 10 ohm, other is 5 ohm, and supply current is given 6 ampere. We have to find out current through individual branch. Let it be I1 and I2. मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था? I1 is equal to supply current into opposite resistance by sum of two resistance. मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था? I1 का फॉर्मूला क्या था? सप्लाई करंट into R2 upon R1 plus R2. I2 का फॉर्मूला क्या था? सप्लाई करंट into R1 by R1 plus R2. तो इसमें अप्लाई करो. What is our supply current? 6. What is the opposite resistance? 5 upon 10 plus 5. So it is coming 30 upon 50, that is 2 ampere. Similarly, what about I2? 6 supply current into opposite resistance is R1, which is 10 by 10 plus 5. So 60 upon 50, that is coming 4 ampere. देखो, current I1 is 2 ampere, current I2 is 4 ampere. 6 will be getting divided. So I1 plus I2 will be equal to net current I. So that means it obeys Kirchhoff's current law. Okay? Okay. But let us take one more example. I'll provide some technique or some shortcut. You can use that shortcut. It will save some time. Okay, see. Let us take example. Let I have two resistance 7 ohm, 3 ohm. Okay, and your supply current is 10 ampere. मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ.
without using that formula you can get the answer, but that is applicable for certain cases. Okay, ये 7 and 3 एक काम करो दोनों को ऐड कर दो. What is the magnitude? 10 ohm. If the magnitude of if the magnitude is same as the magnitude of current is never be equal to resistance. Both are different physical quantity. But ये दोनों को ऐड कर दो, ऐसे ही ऐड कर दो. 7 plus 3 कितना हो गया? 10. So if this magnitude is equivalent to this magnitude, then current reverse हो जाएगा. तो इसका जो वैल्यू इधर आ जाएगा 3 ampere, इसका जो वैल्यू it will come here 7 ampere. See, we'll verify this answer by using this formula. What is I1? Supply current into opposite resistance 3 by 3 plus 7. आंसर कितना आ रहा है? 3 ampere ना, तो सेम ही तो आ रहा था. डन. सिमिलरली व्हाट अबाउट I2? देखो आंसर कितना मिल रहा है? 7. यूज दैट फॉर्मूला. व्हाट इज सप्लाई करंट? 10. व्हाट इज द ऑपोजिट रेजिस्टेंस? 7 by 3 plus 7. It is coming how much? 7 ampere. So you can use this formula, no issue. You'll be getting the right answer. But in certain case, you can go for the trick to save your time. Okay. And same question we can also solve by using another method. That is, see, same question we can solve by using another method also. See. Okay. ये एक पैरेलल सर्किट है. इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज इज सेम. वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? I into R. इन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या है? सेम है, मतलब V is same. That means I can write down I is inversely proportional to R. What is the ratio of resistance? What is the ratio of your resistance? 7:3. मतलब करंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:7 बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. करंट कितना है? 10 एम्पियर. तो 10 को डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर. ये क्या हो जाएगा? 7 एम्पियर. मतलब through 7 ohm resistor 3 ampere current will flow, and through 3 ohm resistor 7 ampere current will flow. Okay. Okay, next is we'll go to another problem. See, let I have two resistor of magnitude like 4 ohm, 5 ohm, and current is 27 ampere. And we'll find out I1 and I2. पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं. ट्रेडिशनल मेथड क्या था? बुक में जो मेथड दिया हुआ है, फॉर्मूला I1 is equal to क्या था? सप्लाई करंट 27 into opposite resistance like 5 by 4 plus 5. Done. So it is coming like 27 into 5 upon 9. So ये 3, 5 into 3, 15 ampere. Done. And what is I2? 27 into 27 minus of 15 कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला डाल दो. 27 into opposite resistance 4 by 4 plus 5. So it is 27 into 4 upon 9, 3. So it is 12 ampere. ठीक है. That means ये 15 ampere, ये 12 ampere. ये हो गया आपका 15 ampere, ये 12 ampere. देखो 15 plus 12 it is coming 27. That means it follows Kirchhoff's current law. But same answer I can get within 5 seconds. Same answer. See, shortcut apply करो. Trick is very important. Shortcut apply करो. And the condition is shortcut is applicable in most of the cases, but जो रेशियो में अगर होगा then you can apply. देखो अभी एक काम करो, ये 4 ohm, ये कितना है? 9 ohm. ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 4 plus 5, it is coming 9 ohm. Let 9 ampere current is flowing. Let, but actually 27 ampere current is flowing. Let 9 ampere current is flowing. मैंने जो शॉर्टकट दिया था क्या है?
इफ द नेट रेजिस्टेंस, नेट मतलब दोनों को ऐड करने के बाद जो नेट मिल रहा है, if net resistance magnitude is equivalent to the magnitude of current, again I repeat, current will never be equal to resistance because both are different physical quantity, we cannot make it equal. But my trick is, if this magnitude is equivalent to this magnitude, अगर ये करंट कितना है 9 एम्पियर, ये कितना है 9 ओम है, तो ये करंट का वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगा एज पर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो ये कितना है 5 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 4 एम्पियर. डन. बट एक्चुअली 9 एम्पियर करंट इज नॉट फ्लोइंग, 27 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग. सो 27 इज 3 टाइम्स ऑफ 9, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना हो जाएगा 12 एम्पियर. इधर क्या हो जाएगा 15 एम्पियर. डन हो गया. और एक मेथड है, मैंने क्या मेथड बोला था, सिंस इट इज पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है. वी नो V इज इक्वल टू I है. अगर वोल्टेज सेम है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. मतलब रेजिस्टेंस का यू टेक द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस 4:5. करंट का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4. बट हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है 27. So 27 ampere will be getting divided with the ratio of 5:4. Yes or no? So कितना हो जाएगा ये 15 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा 9 सॉरी ये कितना हो जाएगा 12 एम्पियर. Yes or no? अरे 27 को will divide in the ratio of 5:4. टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये 3 पार्ट्स हो गया. 3 into 5 is 15, 3 into 4 is 12. Done. ओके ठीक है. मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग ट्राई करो. मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करो. ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट दे रहा हूं. ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख लेना आंसर कितना है. ठीक है, अदरवाइज इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस, बट इट इज असाइनमेंट. you have learned what is my technique, what is traditional method. Use that technique, you find the answer. Eight ohm, 4 ohm, 2 ohm. ठीक है. If like 16 ampere current is flowing through this path, or supply current if it is 16 ampere, what is the branch current? Very easy question है. What is the branch current? What is the value of I1, I2, I3 and I4? It is assignment. I'm sure you can solve it. If you have doubt, then I'll make it clear. No issue. But you try. तुम लोग ट्राई करो. मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ, देखो 8 8 पैरेलल है 4 4 4 पैरेलल है 2 2 2 पैरेलल है 1. नेट रेजिस्टेंस कितना है 1. तो नेट रेजिस्टेंस का बात छोड़ दो. ठीक है, इंडिविजुअल करंट कैसे निकालूंगी, मैंने भी थोड़ा बहुत ट्रिक दे दिया. ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, ये तो हो जाएगा. वो वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड आउट I1, I2, I3, I4. कमेंट बॉक्स में डालना है आंसर कितना है. अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मेरा लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था, यू कैन सी फ्रॉम दैट. ओके ठीक है. नेक्स्ट विल गो फॉर वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला. Next, we'll go for voltage division formula. Voltage division formula. ये voltage division formula क्या होता है? Let there are two resistance
are connected in series and your supply voltage is given to that circuit, and you have to find out voltage drop across two resistors or potential drop across various resistors. Here I have taken two resistors R1 R2. The voltage V1 का फॉर्मूला क्या है? सप्लाई वोल्टेज इनटू सेम रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस. बट इन करंट डिवीजन केस में क्या था? इंडिविजुअल इट वाज पैरेलल कनेक्शन. इन वोल्टेज डिवीजन में सीरीज कनेक्शन. इन करंट डिवीजन में क्या था? इट वाज लाइक I1 is equal to I into opposite resistance by sum of two resistance. But here it is individual voltage or voltage across R1 is supply voltage into same resistance by sum of two resistance, and V2 will be supply voltage into R2 by R1 plus R2. Or else by KVL you can find out V2 will be V minus V1, or you apply KVL, supply voltage minus of V1 will be V2. सो ये हो गया आपका वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल. लेट दिस रेजिस्टेंस इज 2 ohm and this one is like 6 ohm and this voltage is like, let it be 10 volt. यूज दैट फॉर्मूला. सप्लाई वोल्टेज कितना है? देखो, व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज? 10. व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 2 by 2 plus 6, so it is coming 20 upon 8. And for the second one, what about V2? Supply voltage is 10. What is R2? 6 upon 2 plus 6. So 60 upon 8. So that is your answer. But I'll provide some trick, and that trick is applicable in certain condition. If it is given in terms of ratio. Okay, if we'll get this kind of question like, let it be 3 ohm. Okay, let it be like 2 ohm and 4 ohm. Okay, if supply voltage is 6 volt, supply voltage is 6 volt. शॉर्टकट ट्रिक क्या है? देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दो. कितना हो गया? 6. that 6 ohm, let the magnitude of 6 ohm is equivalent to the supply voltage, the magnitude of supply voltage. Actually resistance, potential difference, both are different physical quantity, we cannot compare. बट मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, 2 plus 4 दोनों को ऐड कर दो, ऐसे ही ऐड कर दो जैसे पैरेलल कनेक्शन में था. आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. So the magnitude of this resistance, if it is equivalent to the magnitude of this voltage, तो वोल्टेज जो डिवाइड होगा सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाए. बट करंट डिवीजन में क्या था? इट वाज रिवर्स. तो ये वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट. ये वोल्टेज कितना? 4 वोल्ट. ठीक है. और एल्स यू कैन गो फॉर अनदर थिंग, अनदर प्रिंसिपल. लेट यू नो V is equal to YR. सीरीज में करंट इज सेम, सीरीज में करंट सेम होते हैं, मतलब V is directly proportional to R. टेक द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 2:4. वोल्टेज का भी रेशियो कितना होगा? 2:4 ही होगा. तो 6 वोल्ट, इसमें कितना होगा? 2 वोल्ट, और इसमें कितना होगा? 4 वोल्ट. देन okay, so there are different methods. Okay, let us solve a different kind of problem by approaching or through that trick. I will solve it. Let this resistance is 2 ohm and this is 7 ohm and it is like 45 volt. We can solve this circuit or we can find out the value of V1 and V2 by using 3 different methods. So as per your own convenience you can accept it. Okay, so पहले ट्रेडिशनल मेथड क्या था? फॉर्मूला क्या था? V1 is
supply voltage into R1 by R1 plus R2. So V is 45, R1 is 2 by 2 plus 7. ठीक है. So 945 मतलब 5, तो आंसर हो गया 10 volt. And what is V2? V2 is V into R2 by R1 plus R2. V is 45 into 7 by 2 plus 7. So ये 9, 9, 5, 7 into 5, 35 volt. देखो 45 volt will be getting divided 10 volt and 35 volt. That means it follows KVL Kirchhoff's voltage law. Conservation of energy. ठीक है. It was all about our traditional method. But हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे. ठीक है. 2 and 7 दोनों को ऐड कर दो. कितना हो रहा है? 9. कितना हो रहा है? 9. Let 9 volt is given to the circuit. Let. So the magnitude is equivalent to this magnitude, right? So मैंने क्या बोला था? वोल्टेज सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. तो इसमें वोल्टेज कितना होगा? 2 वोल्ट. इसमें कितना होगा? 7 वोल्ट. Are you getting my point? But actually 45 voltage is given, not 9 volt. So 45 is how many times of 9? 5 times. तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो. ये हो गया 35 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट. देखो आंसर. और else we can go for another method. Another method क्या है? देखो okay, we know V is equal to IR as per the Ohm's law. Series connection में current same. So voltage is directly proportional to resistance, or potential drop is directly proportional to resistance. Take the ratio of resistance. Resistance का ratio कितना है? 2:7. So potential drop का ratio भी कितना होगा? 2:7 ही होगा. But we are given 45 volt. 45 को divide कर लेंगे. 45 को divide कर लेंगे 9 parts में. So each parts will have magnitude of 5 volt. So 5 into 2 is 10 volt. 5 into 7 is 35 volt. हो गया आंसर. ठीक है. So there are different method to simplify complex network. But complex network क्या है? मतलब कि उसमें बहुत सारा लूप होगा और बहुत सारा मेश होगा. We can simplify this kind of circuit by using different engineering, electrical, mathematical, you can say tools like your, जैसे मैंने last time बोला था, nodal principle, nodal analysis, like mesh analysis, superposition theorem, Norton theorem, Thevenin theorem. These are the technique or shortcut theorem. By using that theorem, we can easily simplify a complex network. But उसमें ये छोटा छोटा पार्ट है. Why I'm giving more importance to current division formula and voltage division formula? ये actually small part is very important. So in that circuit will be getting a small segment. In that segment we'll use this concept. So don't forget this one. This is very basic thing. So in basic electrical engineering में DC circuit जो topic है, तो उसके लिए the important part is कि you should know about the equivalent resistance, current division formula, voltage division formula, KCL, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law. Then after we can go for different kind of theorem like nodal analysis, mesh analysis, जो भी है, superposition theorem, Norton theorem, Thevenin theorem. So I hope you like my video. So thank you so much for watching my video.